Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of Nast. I'm Sana Zafar and we bring to you our brilliant graduates from all across the globe. आज भी हमें एक और EME के स्टार ने ज्वाइन किया है from Mississauga, Canada. We have with us Syed Mohsin Ali. Assalamu alaikum. Thank you for joining us. सना कैसी हैं आप? ब्रिलियंट स्टार तो खैर नहीं, लेकिन एन ओल्ड alumni who holds EME very close to his heart. तो ब्रिलियंट तो आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली. Thank you for having me. You're most welcome to the show. आपने graduate किया EME से back in 2003 when you completed your degree in Mechatronics engineering. And currently you have multiple roles. You are director marketing at Folio3. You're also advisor strategy and marketing at Tasdeeq, which is a startup. और इसके साथ साथ आप consultancy भी कर रहे हैं. You're marketing and strategy consultant at startups for new startups, that is. अभी पूछते हैं आपसे ये सारी जर्नी कहाँ से EME स्टार्ट हुआ और कहाँ से खत्म हुआ और फिर ये सब कैसे स्टार्ट हुआ. उससे पहले को लाइटर क्वेश्चंस करते हैं. हाउ इज कनाडा, हाउ इज योर फैमिली डूइंग? यू हैव 2 kids माशाल्लाह. हाउ ओल्ड आर दे? So family alhamdulillah is doing good. एक बेगम, 2 बच्चे alhamdulillah, so didn't get that reversed. But kids are good. Ahmed is now into middle school, so एक वो different age होती है जहाँ पे it's trickier because social acceptance so difficult होती है. Sophie's enjoying it a lot. Our move to Canada was about a year and a half back. हम लोग दुबई से move किए थे, so it was during the pandemic, so it was a challenge. But I guess जो resilience आपकी होती है वो यही होती है कि how do you move through challenges. So alhamdulillah, it's been good so far. Canada has been very kind in the sense कि यहाँ का जो मौसम है, you get to experience all the weathers. चाहे वो आपकी बाहर हो, चाहे आपकी autumn हो, चाहे summer, चाहे winter हो. Winter यहाँ पे लोगों ने बोला था कि वो कहते हैं ना, जिन्होंने लॉ नहीं देखी है तो उन्होंने की देखी है. तो यहाँ पर जिसने blizzard या snowstorm नहीं देखा उन्होंने Canada नहीं देखा. So alhamdulillah, I experienced 2 of those. Shoveled for about 6 hours non-stop. Wow. But so far so good. The move's been good, and it's just about the kids. Kids ki transition is the biggest concern for any parent. So for us, that's been the biggest focus, making sure कि हम लोग outdoors कर रहे हो, यहाँ पे Canada का summers enjoy कर रहे हो, making enough friends and circles जहाँ पे उनके age के दोस्त हों. Definitely, yes. चलें, that's good to know माशाल्लाह. आपकी काफ़ी diverse जर्नी रही है. डिफरेंट आपने फील्ड्स भी स्विच की बीच में और डिफरेंट कंट्रीज में भी सर्व किया. हम उसकी डिटेल में भी जाएंगे, बट थोड़ा सा बताइएगा अपनी हॉबीज के बारे में. इतने सारे काम के साथ साथ आपको टाइम मिलता है कुछ और करने में? समथिंग दैट यू एंजॉय? Absolutely, definitely. मतलब मेरा कॉल होती है to all my friends, to all the colleagues and people, my juniors, कि वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ वेरी मिसइन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट. लोग समझते हैं it's 9 to 5. मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस इज के आपके पास मल्टीपल पिलर्स होने चाहिए, जिसमें एक मेरा पिलर इज माय पैशन एंड माय हॉबीज, एक पिलर इज रिलीजन, एक पिलर इज फैमिलीज, एंड आखिरी पिलर इज ऑफ कोर्स करियर. तो स्पोर्ट्स में बहुत खेलता हूँ. फुटबॉल भी बहुत खेली थी. अभी कनाडा के आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड द राइट ग्रुप जिसका फुटबॉल खेल सके, बट टेनिस शुरू कर लिया. गिटार मैंने शुरू किया था व्हेन माय डॉटर had just been born, but आपको पता है जब बच्चे नए होते हैं, so starting new hobbies is pretty difficult. उसके अलावा जो मेरा सबसे कोर पैशन है, that is helping startups in terms of marketing and strategy. तो उसके ऊपर मैं बहुत पढ़ता हूँ. So reading is something which I hope doesn't I don't get tired of. तो reading बहुत चलती है, because one of the core things that I've learned very early in my life was it's all about unlearning, relearning, and learning new things. And you can't do that if you stop reading. वेरी ट्रू. बड़ी हेल्दी हॉबीज हैं आपकी माशाल्लाह. थैंक्स फॉर शेयरिंग. अगेन हम थोड़ा सा नास्ट के टाइम में भी जाना चाहते हैं, आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में पूछना चाहते हैं, बट उससे पहले आई ट्राई टू एक्सप्लोर द पर्सनालिटी ऑफ आवर गेस्ट एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट के डिफरेंट क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो उन्होंने ओवर टाइम डेवलप किए, कुछ जो हमेशा से थे जिनको उन्होंने हेल्प किया उन ट्रेड्स ने इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन पर्सनल लाइफ. बट आई नो कि आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था which was pretty tragic and traumatic, unfortunately, but at the same time उसका outcome काफी fortunate रहा. How did it shape you? आप उसकी कोई detail share करना चाहेंगे? How did it help you really evolve as a person? So tragic and unfortunate मैं नहीं कहूँगा. So just for the bigger audience, I had an incident where and my wife shares this freely with on her profile as well, on her Instagram handle as well. She's a writer. So I'm completely comfortable sharing that. On the way to my walima, I was shot. So I was for 30 days in the ICU. So it was literally during that time, TV, akhbar, radio pe, because Dula apni shadi pe jate hue shoot hua tha. It was pretty hot back then. I had a lot of well-wishers across the globe who reached out and prayed for all of us, because it was not just me, but the whole family was there.
Alhamdulillah, it was not tragic because we all came out of it stronger. A lot of people ask, how did I feel? And I keep reminding them, yeah, I might have been the easiest person, the person who had it easiest in that journey, because मैं तो high on morphine वगैरह था ना, जो बाकी idiot family थी, my wife जो कि नई दुल्हन थी, 2 days into the family, all of them went through more. So for me, they had a more testing experience versus me. मैं तो कहता था यार हल्की सी एक morphine और लगा लो दर्द हो रहा है, and I'd be out. But alhamdulillah, it was a good journey because my wife did not have me to buffer her when she moved into my house with my family. I had my in-laws at my bedside throughout. So वो जो bonds, वो जो relationship आपको सालों लगते हैं बनने में, वो मुझे overnight बन गए थे. With my wife, she saw me through tough times, which perhaps आप old image देखते हैं कि you take your partners to the washroom, उनको नहलाना धुलाना. She did all of that. So I'm indebted to her, and people say you fall in love. I say love is developed, right? And that's where our love developed. Then as a personality, आपका just main question था, I guess going through such a life-changing moment in your life, you learn the small things in life are more important, and you enjoy things more. आप stress ज़्यादा नहीं लेती. So as a couple, the way that we got defined during that period was, now we don't worry. घर हुआ नहीं हुआ, नौकरी का क्या हुआ, आपके क्या, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला. We're more into ensuring it's not the end goal of life, but it's the journey, and that you enjoy it. You make sure you make other people enjoy it as well, and that's fundamentally how we have lived our life since. Not to stress, to enjoy, and try to inculcate the same with our kids as well. लंबी कहानी को छोटा मैंने कर दिया, but हाँ नहीं माशाल्लाह बहुत हार्ट वार्मिंग आउटकम है. ऑलरेडी न्यू इट, बट यू नो नोइंग द डिटेल. और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि इट वाज जस्ट अ रैंडम incident of terrorism, probably just like that you were shot on the road while it was a mugging. It was a wrong place at the wrong time. I mean, ना मेरी इतनी अच्छी looks है, ना मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे wife के scorned lovers थे who would target me, but it was just a random incident. I wouldn't call it wrong place at the wrong time. We were very religious as a family, and we all believe कि जो होता है it's meant to be, and उसकी जो वो meant to be था, उसी की वजह से I'm the person I am, and the experiences that I've had. So no regrets, nothing of that sort. माशाल्लाह. एंड डेफिनेटली ये तो बहुत ही हमें लाइफ के इंसिडेंट्स एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ये शेप अप करते हैं हमारी पर्सनालिटीज. व्हाटएवर वी थिंक अबाउट, व्हाटएवर वी वांट टू बी, जो हमारे एम्बिशंस हैं, दे प्ले एक्चुअली smaller role as compared to what we actually experience. और mostly वो चीजें जो हम unplanned experience कर लेते हैं, they just happen and then they kind of decide and dictate your rest of life as well. So it's very heartwarming to know that mashallah it built that kind of bond between you and your wife and then rest of the family as well, or as a person you think you grew out of that. So that's definitely heartwarming to know. Allah का शुक्र है एक बहुत बड़े स्केयर के बाद इट वेंट वेल. सो चलें अब हम एक फन क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आप बताएं कि नास्ट मेमोरीज आप कुछ बताएं. ईएमई से फन मेमोरीज कुछ निकालना मुश्किल है आपके लिए, आप सोच सकते हैं? नहीं मतलब वही जिसका मेरा शुरू से यही था कि इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, और नस की एक्सपीरियंसेस बड़ी मिक्स बैग थी बिकॉज मैं यहाँ से कराची बॉय उठ के गया था ऑल द वे टू पिंडी. वहाँ पे ना कोई ज्यादा दोस्त थे, एक तो जानने वाले जो कि बैच में थे, but for the first time hostel में, so far away from parents, very loving and caring family. So it was given the first experience. मेरा जो पहला साल था उस पे it was very होम सिकनेस मुझे बहुत होती थी. So I remember मेरे टेबल के साथ एक कैलेंडर लगा होता था और उस पे I would cross every day. I would save money throughout the semester जो अब्बा भेजते थे हॉस्टल के और मेस के, and I would make sure कि I'd in the middle of the semester I'd book a ticket and go home and whatnot. तो वो जो क्रॉसिंग था वो बड़ा था. But उसके बाद जो दोस्तियां यहाँ पे बनी थी वो अमेजिंग दोस्तियां थी. जो रूममेट था मेरा, जो दोस्त वहाँ पे बने थे, जो हम लोग इंजॉयमेंट करते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो बंकिंग हो. आई रिमेम्बर एक टाइम तो ये था कि मैं और मेरे रूममेट लिटरली कोई 2 हफ्ते हम लोगों ने गए नहीं थे हम लोग क्लास में, और फिर उसके बाद हमारी क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट पड़ गई थी, फिर हर क्लास में हम पहुंचते थे. बट उस पर ये होता था कि हम लोग लेट नाइट सोते थे. इतना लेट नाइट सोते थे 2-3 बजे. आपको पता है हॉस्टल में जिस तरह होता है ना कि आपने मूवीज देख रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है हॉलवे में, तो कोई सोने देता नहीं. तो अगर आप सोने जाते भी ना तो कोई आके दरवाजा धड़म करता था, अबे तू क्यों सो रहा है भाई, तुम भी उठो. तो वो हो नहीं पाता था. एंड देन वी वेक अप अराउंड अबाउट 10 o'clock पे हम लोग जब तक तैयार होने का सोच ही होते थे कि बाहर से दोस्त आते थे कि अरे टी ब्रेक के ऊपर क्या, कुछ नहीं हो रहा यार, बैठ जाए. फिर गपशप हम लोग करते थे. फिर लंच टाइम हो जाता तो लंच टाइम पे हम उठते थे प्रॉपर. सो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक
मजे का एक्सपीरियंस था जो था। 2-3 हमारे टीचर भी थे, मक्खन, आई डोंट नो इफ द ऑडियंस रिमेंबर्स एमए खान, हम उनको मक्खन कहते थे। उनकी क्लासेस हमने बड़ी बंक की थी। बट उसके अलावा जो हमारा इनिशियल 6 महीने हमारे वो जो फूलिंग आप कह लें, रैगिंग कह लें, जो भी कह लें, उसमें बड़ा मजा आता था। एंड दैट्स व्हाट ऑल इट इज अबाउट, राइट? वो जो बॉन्ड्स आप उस रैगिंग के दरमियान करते हैं, ऑफ कोर्स you should not be very rough and tough on people, you know, physically नहीं होना चाहिए, but it should be endearing, because वो जो relationship बनी थी हमारे seniors के साथ, it lasted 4 years from the early morning. रमजान में सुबह 6 बजे के, 6 भी नहीं, उस वक्त तो खैर 4 बजे सहरी होती थी, waiting for our turn, या फिर it would be कि I remember जो सबसे distinct मुझे याद है रैगिंग की, EME के हॉस्टल के सामने एक छोटा सा नाला था, right in front of the hostel। तो हम लोग कहते थे कि एक तरफ अपोजिंग टीम है और इस तरफ हमारी टीम है, एंड we're at war। तो एक बंदा होता था, वो बम था, तो सीनियर बोलता था कि तुम बम हो, उनमें जाके फटो। एंड इमेजिन ये 6.5 फुट का बंदा, 300 पाउंड का बंदा जाके लोगों के बीच में छलांग मार के मैं बम हूं, मैं फट गया और बुड़ूम, और फिर बोलता था सबको अब आप सब गिर जाओ, सब गिरते थे आ करके। So वो जो एक्सपीरियंस थी, that was really fun when you look back at it। और भी काफी थी, जिस तरह when we were seniors, the senior most degree, तो जो हमारा जो मेस था उसका मेन्यू हमारे पास होता था। तो एंड में आपका जो वो शेफ स्पेशल डे होता था थर्सडे को, आई रिमेंबर वी वुड ईट हाउ मच एवर, बिकॉज हम लोग लास्ट डिग्री थी एंड नो वन विल बी ईटिंग आफ्टर अस, देयर विल अ लॉट ऑफ लेफ्ट ओवर। सो आई रिमेंबर एक दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि देयर वाज सो मच chicken wings left over, okay, we had a competition of sorts. I had 35 chicken wings in one sitting. Wow. and the winner of the day was someone called Bilal Noor. He had 55. Oh. and we still took some home. So really good memories. But दोस्तियां बहुत बनी थी उस वक्त, lifelong relationships. Yes, और definitely. निकनेम भी बहुत बने थे, अजीब से निकनेम। किसी बेचारे का अगर स्क्वायर सा हेड है तो उसको डब्बा कहते थे, कोई अगर ज्यादा सोता था तो उसको जहाज कहते थे, कोई अगर ज्यादा, खैर ये तो अब तो खैर उस पे बहुत लंबी गपशप हो जाएगी, आई डोंट थिंक वी हैव दैट मच टाइम, बट it was really good fun with the friends. That's good to know. आमतौर पे हमारे यूएमई के गेस्ट और एमसीएस के गेस्ट भी बहुत ज्यादा फन मेमोरीज शेयर नहीं करते, बट आई एम ग्लैड टू नो कि आप यू हैड सम रियल फन। थोड़ा सा आते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी की तरफ। बताइएगा, जब आप नास से ग्रेजुएट हुए, ईएमई से आपकी डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद यू काइंड ऑफ वेंट इनटू अनदर डायरेक्शन, कैसे आपने एक्सप्लोर किया? यू हैव बीन टू 3 डिफरेंट कंट्रीज आई सपोज सो फार, डिफरेंट फील्ड्स में आपने काम किया जहां आप इवेंचुअली हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक एज मच टाइम एज यू वांट, बट डू शेयर कि आपके इसमें इस जर्नी में because of switching fields or just like that, kahan pe tough decisions aaye the? How did you handle them, or was it all smooth? How did it happen? What helped you? Kahan flexibility zyada chahiye thi, etc. Please share kare. Life is all about a mixed bag of things, right? कभी कभार आप कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाता है। So वो जो mixed bag होता है ना, उस पे flexibility and adaptability is the most important thing. नर्स मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मेरा एक नेबर थे, वो मैकेट्रॉनिक्स में गए थे और मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था। और उन्होंने आके बताया यार मैकेट्रॉनिक्स एक नई डिग्री शुरू हुई है, रोबोटिक्स, कंट्रोल ऑटोमेशन, बड़े इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं इंप्रेस हो गया। आपको पता है तैयार हो रहे थे, एंड आई जस्ट अप्लाइड टू मैकेट्रॉनिक्स इन नास्ट। आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू पीएनईसी के अंदर इलेक्ट्रिकल। आई डिड नॉट एक्सेप्ट बिकॉज आई वांट टू गेट इनटू नास्ट। आई रिमेंबर दुआएं पे दुआएं अम्मा कर रही होती थी, सब कर रहे होते थे। फाइनली जब उसका एक्सेप्टेंस आया, आई वाज ओवर द मून। The journey was really good all those 4 years. Once those 4 years were done, एक दो offers आई थी, but I did not want to jump directly into working immediately. So when I landed back in Karachi, आपको पता है कि पाकिस्तान में masters is very important. So I had a very quick discussion with my dad, where he said कि देखो तुम्हें मास्टर से पहले मैं नहीं करने दूंगा। And unfortunately पाकिस्तान में there's not a lot of career guidance. So जो आपके immediate circle में जो भी आपको आ रही होती है, and those are all very good informed क्या कहते हैं suggestions, recommendations and guidance from your seniors and your peers, but they don't allow you to think yourself. So anyways, whatever happens for a reason. उस वक्त we decided कि IBA का एडमिशन शुरू हो रहा है, तो IBA का एडमिशन के लिए अप्लाई फौरन करते हैं, बिकॉज मैं अगर आज लैंड कर रहा हूँ तो परसों उसकी सबमिशन है और 1 महीने में उसका टेस्ट है। तो हड़ाहुड़ी में वो दिया, सब कुछ सबमिट किया, गॉट एडमिटेड इनटू द डायरेक्ट MBA प्रोग्राम, एंड वहां पे गॉट इनटू मार्केटिंग।
जो नस्ट का अनफॉर्चुनेटली जो मेरी सारी एक्सपीरियंसेस थी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं कहीं लेवरेज नहीं कर सका, लेकिन जो नस्ट की इंजीनियर की लॉजिक होती है, राइट, बिकॉज इंजीनियर को एक चीज आती है लॉजिक करना, ये प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप तोड़ो, मैथ्स किस तरह होती है एंड ऑल दैट, वो मुझे बहुत आगे लेके गया थ्रू आउट माई फील्ड। क्योंकि जब मैंने आईबीए ज्वाइन किया आई फाउंड मार्केटिंग एंड आई रियली एंजॉयड मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग नॉट जस्ट एडवर्टाइजिंग, इट्स स्ट्रैटेजी, इट्स थिंकिंग, it's consumer understanding, it's analytics, it's driving retail distribution, whatever you might think. There's a whole domain to marketing. I really love that. So उस point पे आप कहें अब्बा की intervention into कि यार masters करना है before you go into field, otherwise you're going to miss this important step of your life. That forced my hand towards going into an MBA. फिर उसके बाद उस दौर में हमारे शौकत अजीज थे प्राइम मिनिस्टर, तो बैंकिंग का बूम था, so everyone was getting offers from bank and I joined Citibank, but Citibank mein I didn't really enjoy much because from a marketing point of view it's very limited what you can do in a regulated environment like banking, so there's a lot of approval processes. उसी दौरान मैं and you mentioned right कि क्या हुआ, what conspired to me to be where I am, right? I was just driving and a friend of mine from St. Pat's, वो वॉक करके जाया था अपनी बिल्डिंग की तरफ, तो मैंने उसको बोला जिगर कैसा है आज, तो मैंने रोड पे देखा क्या करे चाय पीते हैं, तो he told me he's working with Lou Biscuits and I said yeah that's a really good company, opportunities है, उसने बोला हाँ यार कल ही एक opportunity आई है, CV भेज। I sent a CV, went for the interview and got the offer. So it's so interesting how you get to where you get to. So marketing वहाँ पे मैंने फिर 3-4 कंपनीज के साथ काम किया और हर कंपनी ने बड़ा सिखाया। लू बिस्किट्स जो बिस्किट्स की कंपनी है, कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स उसको पाकिस्तान में कहते हैं, अब क्राफ्ट हो गई है। दैट टीचेस यू अ लॉट अबाउट इनोवेशन, इनोवेशन किस तरह बनाते हैं, रिसर्च किस तरह करते हैं, कंज्यूमर से किस तरह बात करते हैं, पैकेजिंग किस तरह करते हैं, एक्टिविटी किस तरह, इट्स अ ब्रिलियंट स्कूल। वहां से फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे आई थी to move to Colgate Palmolive, to move to National Foods, then from there on to Reckitt Benckiser, and all of these were such great organizations with very good leaders. I learned a lot, and that's what you need to do, I guess, to your question. In each of these experiences, चाहे वो informed decision थी, चाहे किसी दोस्त ने बोला कि जगह यहाँ पे opportunity है, चाहे senior ने बोला कि I really want you to join my company, it was very coincidental, nothing which was thought out. And hence I'm going back to the same thing कि the flexibility and adaptability तो बहुत important होती है career के अंदर. And on top of that, making those networks that you make, चाहे वो university में हो, चाहे वो office के environment में, because all these people as they grow and you're very sincere to them, right, they will remember you. कोई opportunity आएगी, they'll put in a good word, because in today's day and world that's what you need, a foot in the door. So anyways, Continental से मैंने innovation सीखा, नेशनल फूड से थोड़ा बहुत हमने क्या कहते हैं फूड इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर सीखा, बिकॉज अगर जायका अच्छा है तो बिकेगा, अगर जायका अच्छा नहीं है तो नहीं बिकेगा, एंड दैट पीरियड टॉट मी टू लिसन मोर। बस एज अ मार्केटर आपको ना मुझे सब पता है, लेकिन वहां पे सुनना और सीखने को बड़ा मिला। फिर कोलगेट पामोलिव ने दुनिया को सिखाया है कि सेल्स किस तरह करते हैं, तो वहां पे सेल्स सीखी, और फिर रैकेट पे मैंने बड़ा टाइम गुजारा, कोई 6-7 साल वहां पे गुजारे, जिसमें रैकेट टीचेस यू बिजनेस, रैकेट मेक्स यू अ सेट कि ये बिजनेस, चाहे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, चाहे मैं मार्केटिंग मैनेजर, चाहे मैं जीएम हूँ, मेरा बिजनेस है, तो इसकी सेल्स, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, इसका नंबर किस तरह बढ़ाना है, इसकी कस्टमर को किस तरह टैप करना है, रिटेल किस तरह, वो सब सिखाता है। तो रैकेट मेक्स यू इनटू अ होलिस्टिक बिजनेस मैनेजर, एंड दैट्स व्हाट रूटेड इनटू मी द एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सब कुछ सो फार कराची में ही था? मिक्स पैक, क्योंकि रैकेट मैंने कराची में किया था, फिर कराची से मैं दुबई गया था, और फिर दुबई से ही फिर मैंने मल्टीपल मार्केट्स भी देखी थी जो कि डेवलपिंग मार्केट्स हैं। सो रैकेट से फिर मैं रैकेट पाकिस्तान में मॉर्टिन और हार्पिक में देख रहा था, जहाँ पे अगेन दे वेरी फंक्शनल ब्रांड्स, लेकिन उनको ही इंगेज करने में काफी कुछ आपको सीखने को मिलता है, चाहे इनोवेशन हो, चाहे रिटेल हो, चाहे जो कुछ भी हो। बट जो रैकेट की ओवरऑल फील थी वो थी कि यार अगर आपने अपना बिजनेस ग्रो करना है, आप किस तरह करोगे, भूल जाओ एडवर्टाइजिंग सिर्फ क्या है, प्राइसिंग सिर्फ क्या है, पीएनएल सिर्फ क्या है, सोचो, खुल के सोचो, और फिर तुम चाहे वो जीएम हो, चाहे वो फाइनेंस डायरेक्टर, उनको जाके बताओ, और फिर यू सेल योर ब्रांड वेयर यू वांट टू, एंड दैट्स व्हाट रैकेट टॉट मी। चाहे वो रैकेट पाकिस्तान का मेरा हो, रैकेट दुबई में मैं रीजनल एक रोल में, सेमी ग्लोबल रोल आप कह लें, जिसमें आई वाज लुकिंग आफ्टर अ ब्रांड कॉल्ड शोल, फुटकेयर ब्रांड है अक्रॉस डेवलपिंग मार्केट्स, तो उसकी स्ट्रैटेजी, उसकी इनोवेशन, उसमें stakeholder management बड़ा सीखा, because I was interacting with GMs of 20 markets, a marketing director of 20 markets, और वही वाली बात है जो मैंने शुरू में आपसे बोला था कि learning and unlearning, तो उन लोगों से जब आप बड़े लोगों से बात करते हो या फिर डाइवर्स लोगों से बात करते हो, it's very easy to learn because you're listening and they're giving you so much experience, right? उस पॉइंट पे आके फिर what I felt कि FMCG जो है या फिर कंज्यूमर गुड्स है वो थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है, and I could
I felt that healthcare में वो जो marketing 10 साल पहले थी, अब वो शायद शुरू हो रही है. So I joined a company called BD. Now imagine someone who's never done bio, वो एक कंपनी हेल्थकेयर की कंपनी ज्वाइन करे जो कि कैथेटर बेचती है, सिरिंजेस बेचती है. उसको अलिफ बे एनाटॉमी का नहीं पता, बट उसको सीखना पड़ रहा है कि वेन क्या होती है, आपकी क्या कहते हैं, आप उसकी फ्लेबोटमी क्या होती है, यू नो ऑल द टेक्निकल टर्म्स ऑन व्हाट्स द इम्पैक्ट टू अ पेशेंट, व्हाट्स द इम्पैक्ट टू द डॉक्टर, व्हाट्स द इम्पैक्ट टू द हेल्थकेयर इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दोस डिफरेंट डोमेन्स. फॉर अ पर्सन हु हैज नेवर डन B2B, एकदम से वो B2B एनवायरनमेंट पे आ गया. सो वो एक जो मेरा स्टेप था, that really sparked a fire in me of learning what I don't know. It's a very uncomfortable area. Yes. When you step out of your comfort area. और वहाँ पे the learning that you get in that area which is not comfortable for you, that is the biggest learning you get. And वहाँ पे I got hooked. So उस दौरान फिर ये pandemic आया. Pandemic में and healthcare, because it's slightly slow, काफी regulated environment है. So it was not the pace I used to. So I decided कि यार छोड़ के 3 साल लगा लिए. Resilience is something which I teach my kids as well. So I don't jump ship immediately. I give it a time. और goals होते हैं कि यार इस वक्त तक अगर मुझे ये deliver हो रहा होगा तो I'm going to stay. एक मेरे एक बॉस ने एक दफा बोला था, and I know I'm jumping slightly, कि he said कि यार if you know what your end goal is, you will not get distracted in the middle. यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, एक साल के बाद मेरे यहाँ पे मेरा KPI है, so I need to get there. Till that 1 year I should not get distracted. तो 3 साल मैंने उसके अंदर healthcare के अंदर गुजारा, काफी awards भी लिए, even though I was not from healthcare myself. During the pandemic, a lot of friends were losing jobs. A lot of friends' businesses were going down. So as a marketer with 15, 16 years of experience, I started helping them. Not consulting, helping them कि किस तरह करो, pricing इस तरह देखो, promotion इस तरह देखो, apps को इस तरह इस्तेमाल करो, delivery को इस तरह इस्तेमाल करो. And that was a very rewarding experience. उस वक्त I decided कि यार जो वो लोग कहते हैं ना purpose आपका क्या है, I realized कि यार ये जो purpose है ना, I found that. और फिर एक हमारे बड़े फेमस एक मूवी है, उसमें बाबा रामचर दास चाचड़ ने बोला था एक दफा कि काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी पीछे आ जाएगी. And that's where I understood that particular thing. So I completely shifted away from the corporate environment and I just started working and helping startups, early stage startups, different stage startups. I worked for a year with a startup, had good fun there. Then I joined the current company I'm with because they're very good people. They're based out of Pakistan, but in global operations, primarily 90% businesses from the US. And I joined these guys because I also wanted to understand the technical part of things. So all the startups that I'm helping with, कि अगर ऐप बनानी है या फिर अगर सॉफ्टवेयर है या फिर अगर उसका बैक एंड है तो उसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, सो आई कैन गिव अ होलिस्टिक मेंटरशिप या फिर एडवाइस टू दो स्टार्टअप्स. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई नो आपने बोला था कि टेक एज मच टाइम, एंड आई डोंट नो इफ आई हैव टेकन टू मच टाइम, बट career is never executed the way that you plan it. You must be flexible to different opportunities at different times, and you must always be open to any learning experience that you have. And be comfortable with the uncomfortable. ये 3-4 चीजें हैं जो at least have driven me to where I am in my career right now. Yes, definitely. Thank you so much. बहुत amazing journey है आपकी, and I really appreciate कि जैसे आपने इसका हर step explain किया है. We can learn a lot from it. Starting जहाँ से आपने कहा कि नस्ट के engineers का या generally engineers का logic mind होता है, वो तो tell me about it. I'm living that life. और उसके अलावा जहाँ आपने networking की बात की, definitely आप yes, it lets you know about all the opportunities as well. If you have, friends and colleagues and everywhere in different fields, also it's a huge learning opportunity, because आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को जानते होंगे, जितने ज़्यादा experiences होंगे, personal interaction होगा, you will learn something. So even if you don't get to know of opportunity, you would learn something out of it. और especially आपने जिस तरह बताया कि there were challenges. It was not like everything served in the plate, especially when you move to healthcare sector. आपके challenges थे, आप comfort zone से बाहर आए, but you still managed to माशाल्लाह उसको challenge को accept किया, you took it on and you made something out of it. और end में जो आपने consultancy की बात की, I think that has something to do with the personality traits as well, कि आप में personally you have to be really a people's person, कि आप understand करें दूसरी needs के, जो आप marketing में बात कर रहे थे, मेरा भी majors by the way marketing ही था. So yes, you need to know people, you need to know your audience as well, not just the brand, not just the business. You need to know your audience, your consumers, और उसमें listening बहुत important है जो आपने mention किया. So thank you so much. आपने जो mention किया ना, that's exactly the biggest tell me which realized the opportunity for startups, because जो startup का जो आपका founder होता है ना, उसके अंदर इतना passion होता है, बोलता है ये product है ना, ये need को meet कर रही है, तो वो product पे focus करके फिर sales के लोगों के हाथ में देता है, बोलता है अब जाओ जाके बेच दो.
लेकिन जो बीच में आपने बोला ना कंज्यूमर वाला एलिमेंट जो है कि इसको किस तरह बताएंगे, ये गो टू मार्केट का जो एरिया है, दिस इज वेयर माय एक्सपर्टीज एंड दिस इज वेयर आई रियलाइज अ लॉट ऑफ द स्टार्टअप्स हु आर नॉट एबल टू स्केल, वो यहाँ पे खो जाते हैं. सो यू आर सो राइट. एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई टेल माय सन एज वेल कि अल्लाह ने हमें एक मुंह और दो कान क्यों दिए हैं, राइट? इज टू लिसन मोर and speak less. And I know I'm doing the opposite of that right now. I'm talking too much. So let's You're move our on to your guest next and question. we want to listen to you. जी please बताएं. Yes, that is very true. और like you said, I think startups को तो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, but somehow वो passion में कई दफ़ा गुम जाती है बात. You somehow lose control of that aspect. So very important, know your audience. अगर आपके जिनके लिए आप बना रहे हैं वो इतना enjoy नहीं कर रहे, लेकिन आपके ख्याल में आपने need fulfill कर ली तो business is not going anywhere. Absolutely. चलें, इतनी आपकी जो ज़बरदस्त जर्नी है, इतनी डाइवर्सिफाइड, यू टुक ऑन चैलेंजेस, यू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड यू लर्न सो मच इन बिटवीन. इस सब को देखते हुए आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? आज हैज द डेफिनेशन इवॉल्व्ड ओवर टाइम? व्हाट डू यू से? Success is very subjective, and that's something that what people need to define. A lot of times people define success with what they see success in others. वो डायरेक्टर बन गया, उसने घर ले लिया, उसकी क्या कहते हैं ट्रैवल इतनी है, उसकी इंस्टाग्राम ब्लॉग देखो, राइट? Till you don't define what success is for you, you'll never be happy. And that's what the ultimate goal is, right? Satisfaction and actualization. जो भी आपका वो. अभी कुछ महीने पहले मैंने orientation दी थी in the new organization to the team that I joined of myself. And like I said, I'm a very logical and structured person. मैंने उनको एक हमारी टर्म होती है strategy house के नाम से. तो स्ट्रेटजी हाउस में आप कहते हो कि यार आपकी बुनियाद जो होती है ना वो पिलर्स के ऊपर होती है और वो पिलर्स आपके सक्सेस पिलर्स होते हैं. तो उनको मैंने सक्सेस पिलर्स 5 दिखाए थे. सबसे पहला था फैमिली, सेकंड वाज रिलीजन, थर्ड वाज हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल, फोर्थ was personal development, and fifth was career. Now a lot of time people just have a single pillar, which is the career. So when they're 20 years into the career and they realize that they are not where they wanted to be, they realize कि यार मैं तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं. Versus for me, success is across all of these. So to your question, professional success for me is helping startups right now, is to launch my own startup, which I'm working on right now in 5 years. So I've got a complete goal on that, is to focus solely on my consultancy to the startups in 10 years. So you can see goals hai or specific myriad things hai. From a personal point of view, family ke lihaz se, I'm a big family man. So jo development of my children hai, वो मैंने कहीं ना कहीं लिखे हुए मेरे what is success for them mean to me, asking the right questions, because out of Pakistan आपको पता है ना कि आप सिखाते हो कि जो बड़े ने बोला वही सुनो. I am going the other way. We try to go the other way, not we try to nurture a more questioning environment. So are they able to drive questioning? Secondly, are they showing empathy? So for example, अगर हमारे घर में कोई भी एकदम से अगर कोई चीज गिरे ना तो एकदम से कहीं ना कहीं कोई सवाल आती है, are you okay? Because we've tried to inculcate that in how we interact with our kids, and of course we falter in many places. फिर बाद में फिर मुझे यार ये नहीं कहना चाहिए था, थोड़ा और कुछ कहना चाहिए था. So एक वो family है. Personal health के लिहाज से I want to be able to drive at least 30 minutes exercise every day, which I'm not even close to. My wife is much better in that. जो उनकी exercise regime है, so I'm trying to ask her to mentor me यार कि मुझे डंडा दो और मुझे उठाओ, इस तरह करो वो करो. तो वो second है. जो religious point of view से है कि and I guess you're also in Germany, so you also realize कि bringing up kids in an expat environment, you don't need to do anything else. बाकी the government is taking care of that. बिजली पानी का मसला नहीं है, हेल्थ केयर का मसला नहीं है, एजुकेशन का मसला नहीं, लेकिन बच्चों की तरबियत सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव है. सो वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ कैन वी ड्राइव द राइट एग्जाम्पल. और पहले हमारा था हज करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड दैट a couple of years back. So वो हमने अचीव कर लिया. Now we move on to the next goal. Then from a personal development point of view, it is a lot of reading. It's reinventing, it's relearning, it's learning the guitar. I have that as a goal for me. Learning sign language. Because empathy की अगर आप बात करें ना, we talk, I talk with my son. Here there's so many people across the world who cannot speak, right? And they know sign language. आपको कभी अगर मौका मिले to help someone who's not able to communicate to someone, it's something which again roots back into the empathy part that we were saying. How can you help people, right? So ये 2-3 personal के लिहाज से, and career के लिहाज से I already mentioned. I've got 3 different things. And इसके ऊपर, and that's why I mentioned कि it's subjective, because I saw I think एक TED video थी या फिर कोई एक article था. They say कि आपका time zone और दूसरे का सना का time zone different है. सना जर्मनी में है, आप कनाडा में. You can never live in Sana's time zone. You can only live in your time zone. And that is the same thing with success as well. आप अपनी success define करो.
Yes, definitely. Thank you so much. बहुत ही हार्ट वार्मिंग डेफिनेशन है, बिकॉज हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं ये सारे पार्ट्स. वी गेट टू फोकस्ड, वी गेट टू इन्वॉल्व, और इट कैन बी एनीथिंग. यू कैन स्टार्ट गेटिंग रिलीजियस, देन यू आर बीइंग जस्ट रिलीजियस. इफ यू आर फोकसिंग ऑन करियर, यू आर फोकसिंग जस्ट ऑन करियर. सो ये बैलेंस मेंटेन करना, सब चीजों को साथ लेके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, राइटली सो, सक्सेस तभी है जो माशाल्लाह आप सब मैनेज करिए. So thank you so much for sharing that wonderful definition of success. अब हम इंटरव्यू को बोरिंग नहीं करेंगे और हम इसको रैप अप करेंगे on a fun question. We have another segment which is called अवाम का सवाल, and we try to reach out to friends of our guest. और सिंस आपके एक फ्रेंड तक रीच आउट करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, बल्कि मेरे लिए अनअवॉइडेबल था. So yes, there's a question from Shahan Mumtaz, who happens to be my husband and you're a very good friend. So he asked, आपने पहले भी बात की काफी मेमोरीज की, फन मेमोरीज की और प्रैंक्स की एंड रैगिंग की. उसमें से व्हाट इज लाइक द मेन मोस्ट फन मेमोरी जो आपके साथ हुई एज रैगिंग, जब आपके साथ हो रही थी या जब आप कर रहे थे, उसमें से जो आपको आज तक याद है एंड यू रिमेम्बर इट एंड एंजॉय इट द मोस्ट. I think जो मैंने आपको पहले mention की थी, the war that we had on our hostel grounds, that was the most memorable, even though उस वक्त हम लोग सोचते थे यार ये क्या बकवास है, but now we remember it too frequently. So वो ragging में जो सबसे toughest मेरी ragging थी और जो सबसे fun ragging थी, कुछ ऐसी थी of course which I cannot share on an open family platform. Please don't. Absolutely. तो जो सबसे fun ragging जो मुझे मेरे ऊपर थी, वो यही थी when we were on that war situation on the ground. I think मैं जो था, मैं एक मशीन गन था, तो मैं हर जगह खड़े होके यूं हाथ करके डा 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 करता था और फिर सब गिरते थे. So that was really fun. It was like a 15-minute war from all across. Everyone was there. जो मैंने सबसे intense ragging तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो सबसे मजाया ragging मैंने बंदे के साथ की थी, वो हमारा फुटबॉल प्लेयर था. मैं डिग्री 21 का था, वो डिग्री 23 या 24 का था, and he was a footballer. तो मैंने बोला तुम्हारी स्पीड बड़ी अच्छी है, यहाँ से वहां तक भाग के आओगे? भाग के लाइक मजा नहीं आया यार, दोबारा करो यार. तो बेचारे को 15 मिनट तक मैं तेज करवाता गया. देन जो सबसे टफेस्ट मेरी रैगिंग थी वो ये थी कि मुझे एक फुट्टा दिया था अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग, और मुझे बोला था कि पूरे का पूरा जो नस्ट का हॉल है उसकी मेजरमेंट एग्जैक्ट बताओ. इट सीम्स सिंपल, but because of foot test, you were always on your knee, and by the time I got up, my thighs, my knees, my shin, everything was crying. So that was a fond memory के छोटी-छोटी चीजों में ना आप काफी impact create कर सकते हो. उस वक्त लग नहीं रहा था, but एक और ये भी चीज थी कि I don't know why, maybe it was the influence of TV. तो जब मेरा first day था, तो मुझे इन लोगों ने पूछा था कि जी आप कौन हो, आपके अब्बा कौन है? तो अब्बा मेरे रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कर्नल. पता नहीं क्यों मैंने बोला लेफ्टिनेंट कर्नल, या तो इम्प्रेशन या फिर आपका इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न टीवी था. लेफ्टिनेंट क्या होता है जी? या तो लेफ्ट हैंड होता है जी. तो दैट वाज फन. Okay, definitely. ये तो आपकी माशाल्लाह आपकी काफी सारी fun memories हैं. Good to know. We'll wrap up the interview here. Thank you so much for taking the time out, and thank you for sharing all this fun memories, your journey, and everything with us. Thank you so much for having me, Sana. I wish you all the success with the Stars of Nast. ये काफी अच्छा इनिशिएटिव आपने किया है in bringing people together. I guess one question, and I think I posed this to you last time as well, is how can I help the bigger alumni? I'm here. People can feel free to reach out to me wherever can. And I know you also shared with me the contact details of the Canadian chapter. Yes. So it's really, really heartening to see the alumni actually now kicking up and developing globally. So thanks for adding a chapter to that global expansion. Thank you so much. Yes, inshallah, that's our aim, to keep our alumni connected and make sure कि हमारे juniors भी हमसे learn करें और जो already graduate हो चुके हैं उनको opportunities मिलती रहे. So thank you so much once again. Thank you everyone for watching as well. We'll keep on bringing more alumni to you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.